Hi everyone, my name is Ritika Goswami and welcome back to another video. आज के वीडियो में I will talk about Favorskii rearrangement reaction. So let's start. So एक Favorskii rearrangement reaction में we have nothing but an alpha haloketone, okay? And an alpha haloketone on reaction with a base will give rise to a rearranged kind of product which looks something like this for this case, okay? तो अगर हम ध्यान से देखें तो वी कैन सी दिस इज कॉल्ड एन अल्फा हेलोकेटोन वाई बिकॉज ये एक कीटोनिक फंक्शनैलिटी है. दिस इज समथिंग व्हाट अ कीटोन लुक्स लाइक एंड दीज आर योर अल्फा कार्बन्स क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं कीटोन के. ठीक है, सो द अल्फा कार्बन इज कनेक्टेड टू अ हैलोजन हियर. ओके, सो इट इज कॉल्ड एन अल्फा हैलो कीटोन. So the alpha carbon must have a halogen atom, and that is going to be going to form an alpha haloketone. Okay, so this base, which could be an alkoxide or it could be a hydroxide, okay, or it could be any other base too, will result in formation of another functionality. As you can see, this functionality is a carboxylic acid. So all in all, we can say that a ketone is getting converted into a carboxylic acid. So this is basically an oxidation reaction. Now moving to the mechanistic part of it. So mechanism में if we see कि हमारा जो alpha haloketone है यहाँ पे, right, is first treated with a base. Now the base is always going to attack a acidic hydrogen. तो इस मॉलिक्यूल में वी कैन सी टू एसिडिक हाइड्रोजन्स जो कि प्रॉबेबल एसिडिक हाइड्रोजन है जहाँ पे वो अटैक कर सकता है. राइट, सो अब ऑफकोर्स दिस इज गोइंग टू अटैक ओनली वन ऑफ दीज. राइट, तो जिसकी भी एसिडिटी ज़्यादा है ये ऑफकोर्स उसी को अटैक करेगा. सो इफ दिस OH माइनस अटैक्स दिस हाइड्रोजन राइट हियर, you will get something like this. Okay, which means this is going to be the conjugate base if your this particular hydrogen is attacked, है ना. But if this OH minus attacks this hydrogen, you will get this kind of an conjugate base. Okay, this is the conjugate base which you get. Now of course, according to logics, this is the more acidic one. ये ज़्यादा acidic hydrogen है. क्यों? Because the conjugate base which is formed after this removal of this hydrogen atom or this proton is more stable. एज यू कैन सी, क्योंकि ये जो हमारा कार्बन आयन है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय नॉट ओनली वन बट टू फैक्टर्स. एक तो ये हमारा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है यहाँ पे, एंड प्लस द माइनस आई इफेक्ट ऑफ दिस क्लोराइड हियर. राइट, तो इसलिए हमारा ये स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन है, और क्योंकि हमारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, सो ऑफकोर्स दिस इज द मोर एसिडिक हाइड्रोजन. तो इसी को फॉर्म होना चाहिए, इसको तो बनना भी नहीं चाहिए. दिस वन शुड नॉट इवन बी फॉर्म्ड, राइट, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी इफ वी टॉक अबाउट. बट एज यू कैन सी, जो हमारा ये वाला कॉन्जुगेट बेस है, वंस दिस इज फॉर्म्ड द रिएक्शन इज काइंड ऑफ वेल स्टॉप्ड, है ना, क्योंकि ये हमारा एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे, एंड दिस इज वन ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, दिस इज द अदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एंड वेल दिस विल कंटिन्यू, दिस विल जस्ट बी इन इक्विलिब्रियम. बट इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, यानी कि इफ द लेस एसिडिक हाइड्रोजन the less acidic hydrogen is extracted by this particular base, so this reaction can move further, and that's what actually happens. ठीक है, so this is the most important thing about Favorskii reaction कि जो हमारा less favorable product है, यानी कि जो less stable और I would not call it stable but the less probable product है, उससे हमारा reaction आगे जाता है. ठीक है, so if I talk about the other conjugate base which is this, okay, so what happens is this conjugate, the minus charge on this carbon atom or this carbon ion is going to attack the anti-bonding orbital of this carbon atom, and the Cl is going to be the leaving group here, and you get something like this. Okay, now as you, and plus the Cl minus is removed, which is the leaving group here. Now the OH minus, which is the base, जो हमें पता ही है कि हमने reaction में base use किया है ना, is going to be attacking this carbon atom here, and this is going to move up like this, and here you get something like this. Okay, now when this O minus comes back, okay, तो या तो हमारा दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो this bond is going to break and the minus charge is going to come here, या तो this bond is going to break and the minus charge is going to come here. ठीक है, but in this structure as you can see both these carbon ions are symmetrical. एक ही बात है, तो तुम कोई भी बॉन्ड ब्रेक करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सिमेट्रिकल नहीं होंगे. देन यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा कार्बन आयन एक्चुअली फॉर्म होगा. ठीक है, इन दिस केस आई कैन फॉर्म एनी, तो मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा है. ठीक है, सो यू गेट समथिंग लाइक दिस. ओके, this is the carbon ion that you get. Okay,
I'll just draw this again. This is quite a little chaotic here. This is the carbon ion which you get. All right. This carbon ion is going to attack the water molecule because that is a proton which is available, readily available. So this is going to attack this proton, and OH minus is going to be leaving group now. And here you get your product, which is the product which we already discussed about, and the OH minus ion जो पानी का बच गया है ना, and that is going to be used in the reaction because यहाँ पे OH minus तो use हो ही रहा है reaction के अंदर. So this is the product which you get, which is a rearranged product, which is a carboxylic acid basically, and this is what is Favorskii reaction all about. So the most important thing about this reaction is to, first thing that is most important is that always look for this reaction when you see an alpha haloketone. Okay, so whenever you see the combination of an alpha haloketone and a base, you always look for this reaction and you always try the mechanism of this reaction, and you might end up to get, might, yeah, you will definitely get the product. Okay, and the second thing which you have to notice is, and you have to always be clear with this, कि हमारे यहाँ पे जो not favorable pathway है, राइट, एज यू कैन सी यहाँ पे फेवरेबल जो है वो ये वाला ये वाला हाइड्रोजन आटम रिमूवल था, यानी कि ये वाला कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल था, राइट. बट द लेस फेवरेबल पाथवे इज द वन which is the driving force of this reaction, right? So these are the most important two things which you have to remember, and that's all about it. So if you have any doubts, you can just comment them down below and I will try to answer them. Thank you so much for watching.